Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. A day after Bitcoin plunged following a disappointing US Federal Reserve interest rate hike, investors sent the largest cryptocurrency by market capitalization floating above $28,000 again, about where it stood earlier in the week when hopes were high for a cessation of central bank hawkishness. BTC was recently trading at about $28,170, up almost 2% over the past 24 hours. Even that level represented a retreat from loftier air nearer to $29,000 earlier in the day. Bitcoin has risen about 22% this month and more than 65% since January 1st. Ethereum was trading around $1,800, up by 2.5% in the similar time frame. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्ट्रैटेजी के फर्स्ट फेज को मिड 2024 के आसपास पूरा करने की उम्मीद की है। इसके सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को घोषणा की। इसमें होलसेल और रिटेल सीबीडीसी के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वर्क शामिल है। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने G42 क्लाउड एंगेजमेंट के एक क्लाउड प्लेटफॉर्म और न्यूयॉर्क स्थित ब्लॉकचेन फर्म R3 के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के रूप में जुड़ाव का भी खुलासा किया। घोषणा में कहा गया है कि CBUAE के CBDC का फर्स्ट फेज अगले 12 से 15 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है और इसमें 3 मेजर पिलर्स शामिल होंगे। Moving on, ARK Invest bought coin low and sold it high this week. On Tuesday, Cathie Wood's fund sold 160,887 shares of coin for $13.5 million when the stock was at approximately $83 a share. Just over 48 hours later, ARK bought the dip and purchased 268,928 shares of coin as the stock fell and closed Thursday in the US at $66.3. According to an email sent out Thursday night US time, 230,599 of these shares went to ARK Innovation ETF, while 38,329 of these shares went to the ARK Next Generation Internet ETF. In the course of those 2 days, Coinbase disclosed that it received a Wells notice from the Securities and Exchange Commission, which warns a business that the SEC is planning to take enforcement action against it. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने मॉन्टेनेग्रो में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के घंटों बाद टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर डो क्वन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। क्वन, जिसका लोकेशन महीनों से एक रहस्य बना हुआ था, वह साउथ कोरिया में भी एक ब्रांच का सामना कर रहा है और पिछले साल टेरा USD कोलैप्स के संबंध में इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में है। क्वन को पहले ही US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा फाइल्ड सिविल चार्जेस का सामना करना पड़ा, जिसने फरवरी में आरोप लगाया कि उसने निवेशकों को गुमराह किया। शिकायत के अनुसार क्वन पर डिफ्रॉड, कमोडिटीज फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। एक स्पोक्सपर्सन ने कॉइनडेस्क से पुष्टि की कि जस्टिस डिपार्टमेंट US के लिए उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगा। Moving on, Mysten Labs, the team behind the Sui blockchain, entered into an agreement on Wednesday with the FTX bankruptcy estate to purchase FTX's equity investment in Mysten Labs and Sui token warrants for $96.3 million in cash, according to court filings. The buyback agreement marks the ongoing efforts of FTX CEO John J. Ray III to maximize what creditors recover from Sam Bankman-Fried's collapsed crypto exchange, a process that includes the liquidation of several crown jewels in the FTX Ventures portfolio. Mysten Labs, which has yet to release its highly anticipated Sui token, offered to repurchase the assets in an offer letter to the FTX estate on March 16th. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को पब्लिश डीएपरडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग वर्चुअल दुनिया में बढ़ी है, जो इस साल अब तक टोटल $311 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल लैंड ट्रेडिंग इस पिछली तिमाही में 1,47,000 ट्रेड्स के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसका श्रेय युगा लैब्स के अदर साइड और MG लैंड जैसे प्लेटफॉर्म्स को जाता है, जो इस स्पेस पर हावी थे। Moving on, troubled Asian crypto exchange ZipMex is under increasing pressure as its rescue investor V Ventures missed a fourth tranche payment, leaving the company unable to pay certain staff and at risk of liquidation.
The investor in question, V Ventures, was due to pay a fourth tranche worth $1.25 million on March 23rd, but despite requests, the money hasn't arrived. ZipMex is still optimistic, however, that the payment will arrive. That's all for now. And now let's move on to our next segment, the weekly wrap. Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vichaka Thakur. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, has put up a brave show amid growing challenges from the regulatory authorities, cautioning against dealing in private virtual currencies to the Federal Reserve Chairman monitoring the crypto space turmoil. BTC reclaimed $28,000 mark a day after the US Federal Reserve decided to raise interest rate by 25 basis points. The most popular cryptocurrency had plummeted below the $26,000 mark in the previous day. Ether, the second largest crypto in market value, was recently changing hands at $1,810. BTC rebounded to the same level where it stood earlier in the week when hopes were high for a cessation of central bank hawkishness. Bitcoin has risen about 22% this month and more than 65% since January 1. Now let's cut across to Manoj Dhara to know how the global cryptocurrency market is performing today. Cryptocurrency markets were trading mixed as investors had been assessing the Fed's latest policy move announced this week. Bitcoin traded about 28,000 levels. That's the reason why market is giving a thumbs up. The Fed raised interest rates by a modest 25 basis points and suggested that increases may come soon to a stop. Meanwhile, the US markets regulator SEC has urged investors to exercise caution when investing in the crypto asset securities. And market observers believe that the upshot in the markets could help set clearer rules for the digital asset firms. Meanwhile, Fed Chairman Jerome Powell noted that the credit conditions have tightened, which could put pressure on the economy. Stock futures slipped as investors' attention shifted from this week's Federal Reserve meeting back to the US banking systems. And if you talk about Ethereum, the second largest crypto, was trading higher by around 2%, which was near the $1,800 mark. However, the focus will be more on Ethereum on the back of the latest upgrade going forward in April. Over to you. Thank you, Manoj. In order to preserve their anonymity, users of India's retail central bank digital currency will be able to remove any transactions from the network's ledger, according to a highly placed source who spoke to CoinDesk. Both the wholesale and retail CBDC pilots are now being carried out by the Reserve Bank of India. Now, the retail CBDC operates in at least 15 cities. The latest numbers show that more than 100,000 customers and 13 banks are participating in the pilot now, the person said. We are working on how to ensure privacy is maintained in our CBDC, the person said. We are asking the government to provide a legal backing in form of legislation that will allow customers to delete transactions to maintain anonymity if they so choose to. तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये इंडिया ने पहल किया है क्योंकि जब CBDC लॉन्च हुई तो उसके बाद काफ़ी कम यूज़र्स देखे गए थे CBDC के, लेकिन फिर अब जो कि रिपोर्ट्स आई है जैसा कि पता चला है कि 100,000 यूज़र्स और 15 सिटीज़ में 13 बैंक्स के साथ, तो काफ़ी अच्छी ये खबर है। और साथ ही साथ सबसे पहले जब CBDC लॉन्च हुई थी तो ट्रांसपेरेंसी इसका जो एक की फीचर बताया था RBI की तरफ से, ये बताया गया। लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसके साथ साथ अब एक लीगल हम जो है हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, हमारी एनोनिमिटी बनी रहे। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है जो गवर्नमेंट ने लिया है यूज़र्स की तरफ। अच्छा, ये जैसे RBI ने तो ये पहल की है, इनफैक्ट पहल नहीं की, अभी तो मांग कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा फीचर आया जाए, लेकर आया जाए जहाँ पे अगर कस्टमर को एनोनिमिटी बनाए रखनी है या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, उनको छुपानी है अपनी कोई ट्रांजैक्शन, तो वो डिलीट कर पाएँ। वहीं अगर हम बात करें US के सीनेटर की, जो कि टेड क्रूज, उन्होंने CBDC इसीलिए बंद की क्योंकि उन्हें ये फीचर चाहिए और ये फीचर फिलहाल उनको नहीं दिख रहा था कि प्रोसेस में आता हुआ, इसीलिए उन्होंने फिलहाल उसको होल्ड पे डाल दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीचर बिकॉज हर कोई नहीं नहीं चाहता कि एनोनिमिटी रहे या वो ट्रांजैक्शन को डिलीट कर पाए, वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जो कि आजकल यूजर्स को चाहिए ही। बिल्कुल जी।
Moving on, the highly anticipated Shanghai hard fork on Ethereum has now been set for April 12th. On March 16th, Ethereum core developers approved the target deadline during the all core developers execution layer #157 call. 5 Ethereum improvement proposals are included in the Shanghai mainnet upgrade, including EIP 4985, which will enable staked Ether withdrawals on the Beacon chain, completing Ethereum's transition from proof of work to proof of stake consensus. Developers on GitHub will now confirm the target date of April 12th at 10:27 p.m. UTC epoch 6,209,536. The fork was supposed to happen in March, but developers pushed it back to early April. Validators will automatically receive rewards payments in withdrawals addresses at regular intervals. Stakeholders can also exit positions entirely, reclaiming their entire balance. तो यहाँ पर शंघाई फोक के साथ जो पूरा प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ का जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का जो पूरा एक ट्रांजिशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि अप्रैल 12 को ये हार्ड फोक होने के बाद जो भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ईथर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, स्टेक ईथर विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल दो बातें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि अगर ईथर बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर लिए यूजर्स ने तो बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, तो फिर ईथर का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। वहीं दूसरी बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि एकदम से जो है इतने ईथर विड्रॉ नहीं किए जाए, तो कहीं ना कहीं ईथर का जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मार्च में इस अपग्रेड का हम लोग वेट कर रहे थे, सभी लोग इनफैक्ट, तो लेकिन अब ये अप्रैल में होने वाला है और डेट्स भी आ गई है, तो सभी की नज़र इसकी तरफ है क्योंकि फिर स्टेक्ड ईथर को हम बीकन चेन से विड्रॉ कर पाएंगे। According to a Reuters report on Monday, March 20, Taiwan's Financial Supervisory Commission will take over all digital payments and transactions. This new step is being taken in response to the growing demand for digital asset regulation. Yuan Tianmu, chairman of the FSC, stated that the financial regulator would initially monitor digital payments and transactions. However, non-fungible tokens will be excluded from its regulatory operations. The latter is still in its early stages in the digital asset industry and will be subject to regulations over time. Furthermore, the official announcement is expected to be confirmed before the end of March. तो सभी लोग रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, और अब चाइना ने यहाँ पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या ये बिल्कुल लेके आ गया है, और इसके साथ साथ सभी जो ट्रांजैक्शंस है वो मॉनिटर करने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो है NFTs जो है इसके अंडर नहीं आती, तो आई थिंक NFTs पे शायद कोई टैक्सेशन ना हो और इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस भी ना हो, और लेकिन फिर भी जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो मार्च एंड तक आ जाएगी। देखते हैं कि चाइना एक्चुअली कितना पुख्ता तैयारी करता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा सा चाइना कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था क्रिप्टो करेंसी, लेकिन अब जो अडॉप्ट कर रहा है तो क्या क्या रेगुलेशंस लेकर आने वाले हैं, तो उस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। Moving on, the DeFi Llama team apologized Monday for confusing its users over the weekend through a statement directed people to a forked version of its decentralized finance dashboard. The DeFi Llama team would like to apologize for the events that unfolded yesterday as a result of poor communication and a misunderstanding within the team, the company tweeted. Yesterday, a rift between the OxNGMI and OxLam4, the company's two pseudonymous co-founders, erupted in public over a potential token launch. But after one side teased a llama-themed cryptocurrency days ago, the collective clarified today that it wasn't in the works. We would like to put what happened behind us, DeFi Llama said. There is no llama token currently planned, and any airdrop will be discussed with the community as every important decision is. So, I think इससे ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन एंड चीज़ें प्लान ना होना का खराब एग्जाम्पल नहीं हो सकता, बिकॉज कभी भी कोई दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात करते हैं तो एक रूम में बात करते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है और फिर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की जाती है, और यहाँ पर ये दो फाउंडर्स ऐसे दोनों फाउंडर्स दोनों ने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई कि एक्चुअली क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। पर थैंकफुली अब इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि कोई लामा टोकन अभी फिलहाल लॉन्च नहीं होने वाला है, और कुछ भी होगा तो अनाउंसमेंट की जाएगी और कम्युनिटी का जो है हमेशा उन्हें इन्वॉल्वमेंट जैसे रहता है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं उनमें एक तरह से एक वो बन जाता है कि अभी क्या होने वाला है, एक सेंटिमेंट बन जाता है। जी, लेकिन अब बताया गया है कि कोई भी एयर ड्रॉप या कुछ भी होता है तो उसके पहले अनाउंसमेंट की जाएगी, जो कि पहले भी की जानी चाहिए थी। तो इससे थोड़ा सा डीफाई लामा का आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बन गया, इमेज खराब नहीं होती। बिल्कुल। Moving on, Sony Interactive Entertainment published a patent titled NFT Framework for Transferring and Using Digital Assets Between Games Platforms on March 16, 2023.
Sony investigates a framework for using NFTs across generations and platforms in the new filing, which includes Microsoft and Nintendo consoles, VR headsets, AR headsets, PCs, and more. According to the document, current systems are technologically insufficient for players to use their assets across multiple games and platforms. Furthermore, the patent proposes a system for rewarding select players through NFTs. The company also wants to bring NFTs to cross-platform esports, rewarding winners with special NFTs or even blockchain-based currency for different tournament brackets. The patent enthusiasts using those NFTs to buy in to play the tournament's next round or transfer it to another player who wishes to continue playing. तो यहाँ सोनी ने एक बहुत अच्छी पहल की है क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी वेब3 का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और जो कि होना भी चाहिए। तो काफ़ी अभी तक जो पहले का सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई कि लोग जो अपने एसेट्स थे या वो दूसरी जो प्लेटफॉर्म है उस पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन अब सोनी के इस पेटेंट के बाद शायद ये पॉसिबल हो जाए, विच विल बी एक्चुअली अ ग्रेट डेवलपमेंट फॉर वेब3। आई थिंक ये जैसे जो वेब 2 पर जो अभी भी प्लेयर्स वेब 2 पे हैं उनके लिए वेब 3 पर माइग्रेट होना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि उन्हें एक तो वेब 3 का एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि जो वेब 3 के सारे NFT अवतार्स हैं या उनके स्किन्स हैं या जो भी कलेक्टिबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो आप अगर आप वेब 2 पे है या वेब 2 स्टैंडर्ड की गेम खेल रहे हैं तो भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट गेम्स पर आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे, तो वो अच्छा होगा। तो अगर वेब 2 के इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वेब 2 के गेमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो अपने आप वेब 3 पर अपग्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बिल्कुल, एंड प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे NFT के फॉर्म में। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बूस्ट। वैसे भी गेमिंग की जब बात करते हैं तो इंडिया 3rd नंबर पर आता है, तो गेमर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, गेमिंग में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक दिस विल ओनली फर्दर गिव इट अ पुश, राइट? करेक्ट। So moving on, crypto exchange Coinbase may soon face an enforcement action tied to its listing of potential unregistered securities, the company said on Wednesday. Coinbase disclosed the SEC alleged the US-based company may be operating in violation of securities law in the running of its exchange and staking services. The regulator targeted Coinbase with a so-called Wells notice that informs the business that the agency is planning a future action that could include an injunction or cease and desist without specifying exactly what activity it found in violation. The notice is preliminary and such warnings don't always lead to enforcement actions. The company has until March 29th to let the agency know whether it intends to rebut the SEC enforcement division's findings that securities law have likely been violated. तो यहाँ SEC की नज़र आजकल काफ़ी कंपनीज पर है, हाँ, तो अब Coinbase पर उनकी नज़र है और वो यही कह रही हैं कि Coinbase ने सिक्योरिटीज़ लॉ को ब्रीच किया है या वायलेट किया है और उनके अंडर बहुत से लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी जो है वो शायद सिक्योरिटीज़ हैं, तो लेकिन फ़िलहाल उन्होंने उन्हें एक वेल्स नोटिस दिया है जिसमें कि ये उन्हें पता है कि वो जो SEC है वो जांच करेगा Coinbase पर, लेकिन क्या रीज़न है वायलेशन का वो उस पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन अब आगे देखते हैं, 29 मार्च तक का वक्त है कि क्या होता है और कितना एक्शन एक्चुअली लेता है SEC। तो लगता तो है कि SEC पूरे मूड में है इस बार Coinbase के लिए ये लेकिन Coinbase की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनको रीज़न भी पता नहीं चलेगा और पे प्रॉब्लम्स आने वाली है। Moving on, a person believed to be Terra Luna co-founder DogeCoin was detained on the country's soil on March 23, according to a post by Philip, the Interior Minister of Montenegro. Since the announcement was made, the local news source WHST has confirmed that the South Korean national who was detained is the person who was announced on Twitter by Montenegro's Interior Minister. As told by him, an individual suspected of being the former cryptocurrency king was detained at the Podgorica airport with falsified documents, and authorities are awaiting official confirmation of identity. Montenegro is geographically south of Serbia and shares borders with the country. तो यहाँ पे DogeCoin को सभी लोग ढूंढ रहे थे और अब पता चला है कि सर्बिया में जो कंट्री है वहाँ पे वो पाए गए हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। एक्चुअली जब ये लास्ट ईयर टेरा लूना कोलैप्स हुआ था, इट वाज अ बिग कोलैप्स जिससे एक्चुअली पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला दिया था। और उसके बाद से आई वुड से जो एक के बाद एक एक्सचेंजेस का फॉल आउट हुआ, कोलैप्स हुआ, बैंक्रप्सी हुआ, कहीं ना कहीं शुरुआत जो है टेरा लूना के साथ हुई थी। उसके बाद से ही जो है DogeCoin को एक्चुअली पुलिस ढूंढ रही थी। बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से केसेस उनके ऊपर हैं, बहुत से सवाल लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हालांकि वो एक और कॉइन लेकर आना चाहते थे। अच्छा वो डिजास्टर नहीं हुआ पर फिलहाल आई थिंक इट्स ऑल्सो इन अ गुड
डायरेक्शन की अब वो हिरासत में या पकड़े गए हैं, पता चल गया कि वो कहाँ है, तो आगे की जो कार्रवाई है वो हो जाएगी फ्लॉलेसली। बढ़ते हैं आगे। Over the past week, the value of a group of non-fungible tokens connected to former US President Donald Trump increased by almost 30% in Ether-dominated value amid rumors that he may be charged with crimes and detained. Trump digital trade cards built on Polygon were selling for nearly 0.59 Ether, up from 0.33 Ether last week. Data from NFT marketplace OpenSea shows that over 735 Trump NFTs had been sold over this time, drawing 401 Ether in trading activity. Prices for NFTs are rising as news of Trump's potential arrest spreads. The former US president is expected to be indicted in the coming days, as Fox News first reported on March 17th. It is unknown what are the exact charges for the indictment, as they will only be unsealed when he appears in court. तो जब एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो ये NFTs आई थी तो कुछ खास इसको ट्रैक्शन नहीं मिला था। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये जो NFTs हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये कॉपीड हैं और ऐसे करके, क्योंकि वो पिक्चर्स भी थोड़ी फ़नी तो थी, कोई सुपरमैन कोई कुछ। तो एनीवेज़ अभी वो जो काफ़ी नीचे गया था प्राइस इन NFTs का, वो इन कार्ड्स का, वो एकदम से पंप हुआ है विद द न्यूज़ दैट ही माइट फेस चार्जेस। तो 0.33 ईथर से सीधा 0.59 ऑलमोस्ट 1 ईथर पर पहुंच गया है इन NFTs का प्राइस। जी, तो पहले भी यहाँ देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्टेटमेंट भी देते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, हलचल हो जाती है सभी लोगों के बीच में, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब उनकी NFTs का जो ये रेट है इतना बढ़ रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि उनके अरेस्ट की जो ये बातें हैं, खबरें आ रही हैं। That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great day.